Hello, Bachcho. Let's read this question. In the following questions, a statement of assertion A is followed by a statement of reason R. Assertion says when liquid drops merge into each other to form a large drop, energy is released. Reason says when liquid drops merge to form a large drop, surface tension decreases. इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है surface tension is defined as surface energy per unit area. S is the surface tension, U is the surface energy, and A is the area. This equation implies delta U will be equal to S into delta A. Surface tension of a liquid does not depend on the shape of the liquid. Let's assume कि n small drops combine करके एक big drop बना रहे हैं और इन small drops का radius है small r और इस big drop का radius है capital R. Small drops के volume का sum big drop के volume के equal होना चाहिए. So n into volume of small drops should be equal to volume of big drop. N into 4 by 3 pi small r cube is equal to 4 by 3 pi capital R cube. 4 by 3 pi दोनों साइड से कैंसिल हो गए. So r cube is equal to n into small r raised to power 3. So r is equal to n raised to power 1 upon 3 into r. Surface area of a sphere is given by 4 pi r square. Surface area of small drops is equal to n into 4 pi small r square. Surface area of big drop is equal to 4 pi n raised to power 1 upon 3 into r whole raised to power 2. स्मॉल ड्रॉप्स के सरफेस एरिया को s से डिनोट कर लेते हैं और बिग ड्रॉप के सरफेस एरिया को s डैश से डिनोट कर लेते हैं. सो s अपॉन s डैश इज इक्वल टू n इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर अपॉन 4 पाई n रेज्ड पावर 1 अपॉन 3 इंटू r होल स्क्वायर. 4 पाई कैंसिल हो गया. So this is equal to n into r square upon n raised to power 2 by 3 r square. R square भी cancel हो गया. So s upon s dash is equal to n raised to power 1 minus 2 by 3. So this is equal to n raised to power 1 by 3. n small drops के number को denote करता है. इसका मतलब n is a natural number greater than 1. n raised to power 1 upon 3 1 से बड़ा होएगा क्योंकि n एक नेचुरल नंबर है और 1 से बड़ा है. s upon s dash is equal to n raised to power 1 upon 3. Comparing equation 1 and 2. S upon s dash is greater than 1. This implies s is greater than s dash. सारे छोटे ड्रॉप्स का सरफेस एरिया बड़े ड्रॉप से ज्यादा है. लेट्स फाइंड चेंज इन एरिया. डेल्टा ए इज इक्वल टू इनिशियल सरफेस एरिया जो कि स्मॉल ड्रॉप्स का सरफेस एरिया था s माइनस सरफेस एरिया ऑफ द लार्ज ड्रॉप s डैश. s डैश से बड़ा है दैट मीन्स डेल्टा a इज लेस देन 0 और डेल्टा a इज नेगेटिव. Now delta U था S into delta A. So delta U is also negative. Delta U है change in surface energy and delta U negative आ रहा है. इसका मतलब energy is released. This means energy is released. Let's check the statements.
असर्शन कह रहा है when liquid drops merge into each other to form a large drop, energy is released. ये स्टेटमेंट अभी हमने मैथमेटिकली प्रूव किया, सो assertion is a correct statement. रीजन कह रहा है when liquid drops merge to form large drop, surface tension decreases. रीजन is a wrong statement. surface area decrease करता है लेकिन surface tension constant रहता है. So the final answer to this question is option 3. I hope you have understood the solution well. All the best.